Technology is a magic wand that can create wonders. Good morning everyone. I welcome you all to the virtual assembly of class 8B and our topic is technology, a boon. In today's world, technology is part and parcel of our lives. It transforms the way we think, cook, talk and work. विज्ञान और टेक्नोलॉजी आज तेजी से हम सबके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे हमारी हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है। सही ही कहा गया है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। यह सबके दिल में छा गया। जीवन जीने का ठिकाना आ गया, खुशियों का अब जमाना आ गया। तो चलिए करते हैं आज की सभा की शुरुआत प्रेयर से। O God, O Lord, to Thee I pray, increase my knowledge day by day. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। Technology has made our lives very simple and smart. So, let us hear English and Hindi speech by Kaina and Pransh. Now, the English speech. I want to talk on the topic technology. Technology is the most useful form of science for the general population. In simple words, technology is the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry. Technology is very important because it helps to make our lives much easier and comfortable. The modernization that the world is witnessing today has also been possible because of technological developments in different fields. Although technological advancements are important for us, it is also true that we seem to be over-dependent on them nowadays. The use of mobile phones was to connect people, but its misuse is leading to so many crimes. Technology is also important for the economic growth of a country. Technology is definitely a boon if not misused.
आज का युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने न केवल मानव जीवन को विकास की तीव्र गति प्रदान की है, अपितु उसे बुलंदियों की नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा दिया है। टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन सभी तरीकों, उपकरणों एवं सिस्टम से है जिनका प्रयोग विज्ञान की दुनिया में किसी खोज, आविष्कार, ज्ञान एवं अनुभव को विकसित करने के लिए किया जाता है। आज टेक्नोलॉजी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन, यातायात आदि के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं। आज ऐसी मशीनें, सॉफ्टवेयर एवं उपकरण बनाए जा रहे हैं जिसके कारण न केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, बल्कि लोगों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास भी बढ़ा है। निसंदेह टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में चीजों को करने के तरीकों को सरल व सुगम बना देती है, परंतु इसका सही तरीके से न इस्तेमाल हमारे जीवन को दुष्कर बना सकता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के कारण उद्योगों से निकलने वाली दूषित गैसें पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रही हैं। मनुष्य अब टीवी, मोबाइल, नेट आदि का प्रयोग ज्ञानवर्धन अथवा जरूरी कार्यों की अपेक्षा में अपने निजी स्वार्थ के लिए करने लगा है। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री व अफवाहें फैलाकर मनुष्य नैतिक व सामाजिक पतन करने पर आमदा है। जहाँ टेक्नोलॉजी ने देश दुनिया को तरक्की का नया आयाम प्रदान किया है, वही इसका ठीक ढंग से न इस्तेमाल मनुष्य एवं प्रकृति के लिए विध्वंसक हो सकता है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद जरूरी वक्त पर ठीक तरीके से ही करना चाहिए। Today's national news. NI court grants bail to 10 in coal smuggling case. Farm fires may peak next week. The straw clearing machines are not very successful and affordable for all farmers. 6 GNK parties form alliance for restoration of Article 370. Hathras, SC reserves order on plea for court-monitored probe. Part terror groups form fronts as parts of new strategy in terror. RT-PCR test at high positivity rate crosses 6%. Coronavirus vaccine update. China vaccine shows positive results. Corona positivity rate of 22 states crosses national average. Good morning. Today's international news. Michelle Obama launched #voting squad challenge to urge Americans to vote. A US $60 experimental COVID-19 vaccine rolled out in East Chinese city. Paris goes into curfew as Europe ramps up virus restrictions. Europe bows under second virus wave. Tighten curves. Good morning. Today's sports news. Kings 11 Punjab's 2 super over wins over Mumbai Indians was probably the zenith of IPL drama this season. Mohammad Shami and KL Rahul helped Punjab clinch this crucial victory. Chennai Super Kings may not have fired in the current season of IPL yet, but MS Dhoni is all set to add another feather to his cap tonight as he plays his 200th match. American Jason Korak managed to win his first ever PG Tour title at the CJ Cup in Las Vegas on Sunday after 233 unsuccessful attempts. From golf to tennis now, Andrei Rublev joined Novak Djokovic to win 4 tour single titles in the pandemic-shortened 2020 season as he beat Berna Korek in the final of St. Petersburg Open. Today's weather report. The humidity level is 25%. The dew point is found to be 10 degrees Celsius. The clear visibility is still 2.8 kilometers. Thank you and have a nice day. Let us see a small PPT based on the topic Technology a Boon by Vandat Kad, Pratyush Garg, Tavish Kela and Arav Gupta. Technology a boon, the key to success. Technology can be a powerful tool for transforming learning. It can help affirm and advance relationships between educators and students, reinvent our approaches to learning and collaboration, shrink long-distance equity and accessibility gaps, and adapt learning experience to meet the needs of all learners.
Uses of technology. There are several uses of technology in our modern life. For example, communication technologies, office productivity, record keeping and retrieval, internet and search, cloud computing, and a virtual assistant like Siri or Google Assistant. iMovie. iMovie is a video editing software for iOS devices. It helps in adding special effects to the video. It can also merge videos filmed in front of a green screen. Brainly is the world's largest peer-to-peer learning community for students, parents, and teachers. At Brainly.in and its group of websites around the world, students connect to both receive and offer help with homework problems and questions. MIT App Inventor is a web app developed by the Massachusetts Institute of Technology or MIT. MIT App Inventor is designed to teach computational thinking concepts through the development of mobile applications. Students create applications by dragging and dropping components into a design view and using a Visual Blocks language to program application behavior. P5.js web editor is an online platform for learning to code in a visual way. Designed for all ages and abilities, anyone can get started quickly creating, editing, and sharing P5.js sketches. Thank you. Dance is a performing art form consisting of purposely selected sequences of human movements. It is a way that uses the body as an instrument of expressions and communication. Through dance, students learn teamwork, focus, and different skills. हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियों का ये ज्ञान है। ताज अपना ताजमहल हुनर की पहचान है। ना जग जगदीश से पौधों में भी तो जान है। रमण ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। Mind fresh. So, thought for the day by Tavleen. The thought of the day is technology, like art, is a soaring exercise of the human imagination. I repeat, technology, like art, is a soaring exercise of the human imagination. Thank you and have a nice day. Now, I would like to call Devansh Rohatela for enlightening us with the Sanskrit shlok. सुप्रभात। आज का विचार बिंदु, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती सफल तस्य जीवन। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में युक्त होता है, उसका जीवन सफल है। धन्यवाद। I request you all to stand up in honor of National Anthem.